Indian Navy. He is a gunnery and missile warfare specialist, and during his career, he has commanded 4 ships, including Indian naval ships Kulish and cadet training ship Tir as senior officer, 1st Training Squadron. He has commanded Mauritius Coast Guard ship Guardian and has served as Chief Staff Officer Operations of the Mauritius Coast Guard while on deputation. देवियों और सज्जनों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य के भूतपूर्व कमान अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। इन्होंने विभिन्न कालावधियों में इस प्रतिष्ठान का कुशल प्रगति में निस्वार्थ योगदान दिया है। May we also take this opportunity to acknowledge all former commanding officers of INS Dronocharya who are present with us today, who have, during their respective tenures, taken the unit to greater and greater heights. Ladies and gentlemen, as we await the arrival of the dignitaries, allow us to take you back in time and go through the journey of INS Dronacharya. After the Second World War, the Royal Indian Navy felt the necessity for expansion of facilities for gunnery training, following which training commenced in 1939 at Naval Dockyard, Bombay. Institutionalized gunnery training commenced with the setting up of gunnery school at an independent location at 3 Palazzo, Malabar Hill, Bombay on 1st of June 1942. And 500 to 600 sailors were under training by the end of the year. A suitable site was finally found at Manora Sandpit, Karachi for establishing the gunnery school, which was commissioned as HMIS Himalaya in January 1943. Training was shifted on 26 November 1943 to HMIS Himalaya, considered the most modern naval gunnery school of its type in existence outside the British Isles. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉयल इंडियन नेवी को तोप प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता महसूस हुई। अतः
सन 1939 में नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। 1 जून सन 1942 को 3 पलाजो मालाबार हिल में एक स्वतंत्र स्थान पर गनरी स्कूल की स्थापना के साथ संस्थागत गनरी प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और सन 1942 के अंत तक 500 से 600 नौसैनिक प्रशिक्षणाधीन थे। अंततः गनरी स्कूल की प्रतिस्थापना हेतु कराची के मनोरा सैंडपिट में एक उचित स्थान मिला, जिसे जनवरी सन 1943 में HMIS हिमालय के नाम से कमीशन किया गया। 26 नवंबर सन 1943 में HMIS हिमालय के उद्घाटन पश्चात प्रशिक्षण को यहाँ स्थानांतरित किया गया। यह ब्रिटिश द्वीपों के बाहर स्थापित अपने स्तर का अत्याधुनिकतम नौसेना तोपची स्कूल था। When India gained independence, HMIS Himalaya was allocated to Pakistan, and subsequently, in October 1948, basic gunnery training facilities were established at Naval Base Kochi. Advanced gunnery training course was introduced in the year 1954, followed by the specialist course for gunnery instructor in 1957 and Indian long gunnery course in 1958. In March 1978, the gunnery school was shifted to be co-located with Coastal Battery and Naval Coast Battery at Fort Kochi and was commissioned as INS Venduruthi II on 8th of March 1978. The institution was renamed as INS Dronocharya on the 27th of November 1978 by the then Governor of Kerala, Srimati Jyoti Venkatachalam. भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने पर HMIS हिमालय को पाकिस्तान को आवंटित किया गया और बाद में अक्टूबर सन 1948 में नौसेना बेस कोच्चि में बुनियादी तोपची प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की गईं। वर्ष 1954 में उन्नत गनरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया और सन 1957 एवं 58 में क्रमशः गनरी इंस्ट्रक्टर विशेषज्ञ पाठ्यक्रम और इंडियन लॉन्ग गनरी कोर्स प्रारंभ किए गए। मार्च सन 1978 में गनरी स्कूल को फोर्ट कोची के तटीय बैटरी और नेवल कोस्ट बैटरी में स्थानांतरित कर सह स्थापित किया गया और इसे 8 मार्च सन 1978 को भारतीय नौसेना पोत वेंडुरुथी द्वितीय के रूप में कमीशन किया गया। 27 नवंबर सन 1978 को केरला की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम द्वारा संस्थान का पुनः नामकरण भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य किया गया। परेड अब वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, ध्वजाधिकारी दक्षिणी नौसेना कमान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। Vice Admiral M.A. Hampiholi is an alumnus of the National Defence Academy, Khadakwasla, and was commissioned on 1st July 1985. An anti-submarine warfare specialist, the Admiral has commanded 3 Indian naval ships, Talwar, Magar, and Nashak. As a flag officer, the Admiral has held important appointments as the Assistant Chief of Personnel, Human Resources Development at Naval Headquarters, Flag Officer Sea Training, Flag Officer Commanding Western Fleet, and the Director General, Naval Operations. Prior assuming charge as Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command on 30th November 2021, he served as the Commandant, Indian Naval Academy, Edimala. वाइस एडमिरल M.A. हम्पीहोली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1 जुलाई सन 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। एक पनडुब्बी रोधी विशेषज्ञ एडमिरल ने 3 जहाज़ों की कमान संभाली। वाइस एडमिरल M.A. हम्पीहोली ने 30 नवंबर सन 2021 को दक्षिणी नौसेना कमान के ध्वजाधिकारी के रूप में कमान संभाली।
परेड अब नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ADC के आगमन की प्रतीक्षा में है। Admiral R. Hari Kumar took over as the Chief of the Naval Staff on 30th November 2021. He was commissioned into the Indian Navy on 1st of January 1983. The Admiral is a gunnery and missile warfare specialist and has commanded Coast Guard ship Charlie 01, Indian naval ships Nishank, Kora, Ranveer and Virat. His flag appointments include Commandant Naval War College Goa, Flag Officer Sea Training, Flag Officer Commanding Western Fleet, Chief of Staff Western Naval Command, Chief of Personnel and Flag Officer Commanding in Chief Western Naval Command. The Nishan is a symbol embodying the spirit of the people who fight under it. A commissioned unit ashore that is awarded the President's Color or the Nishan considers it the highest honor that the Supreme Commander, the President of India, bestows on it. Once the Nishan is awarded by the Honorable President and inserted into the Guard of Honor in front of you, the Guard of Honor will then be addressed as the Nishan Guard. The design of the President's color has three main constituents. The national flag in the upper left canton adjacent to the staff, the state emblem on the upper right canton on the fly side with a navy blue gold octagon below it. The octagon has twin golden octagonal borders encompassing the Navy's crest and the motto of the Indian Navy, Shamno Varuna, inscribed in golden Devanagari script. The golden state emblem signifies power, courage, confidence, and pride, whilst the navy blue golden octagon draws inspiration from Shivaji Maharaj Rajmundra and represents the 8 directions symbolizing the Indian Navy's maritime outreach. Dear spectators, the award of President's Color is the highest honor bestowed upon a military unit in recognition of its exceptional service to the nation, both during war and in peace. The concept of carrying colors, standards, or guidons in military organizations is believed to have originated in ancient Egypt. This was done to mark the location of the commander and to act as a rallying point for the troops. In the Middle Ages, European armies emblazoned their standards with the commander's coat of arms. In modern times, these colors or standards are mostly used on ceremonial occasions and are displayed during formal parade. माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त निशान के सम्मान गार्ड में सम्मिलित होने के पश्चात इसे निशान गार्ड कहकर संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रपति निशान के 3 मुख्य भाग हैं। ऊपरी बाएं कोने में राष्ट्रीय ध्वज, ऊपरी दाहिने कोने में भारत का राज चिन्ह और उसके नीचे नीला स्वर्णिम अष्टकोण। भारतीय नौसेना के अष्टकोणीय क्रेस्ट पर स्वर्णिम देवनागरी लिपि में अंकित है शम नो वरुणः। जहां एक ओर भारत का राज चिन्ह भारतीय नौसेना की वीरता, शौर्य, आत्मविश्वास और गर्व को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित स्वर्णिम अष्टकोण
8 दिशाओं में भारत के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक है। राष्ट्रपति का निशान युद्ध अथवा शांति काल में किसी भी चल अचल सैन्य गठन को उनकी असाधारण राष्ट्र सेवा हेतु प्रदत्त महानतम सम्मानों में से एक है। सैन्य संगठनों में ध्वज के प्रयोग की संकल्पना प्राचीन मिस्र से उद्भूत मानी जाती है। इसे सेनापति का स्थान चिन्हित करने एवं सैन्य दल के एकत्रण हेतु उपयोग किया जाता रहा है। आधुनिक काल में ध्वज प्रायः आधिकारिक समारोहों और औपचारिक परेड में प्रदर्शित किए जाते हैं। भारतीय नौसेना में निशान एक निशान अधिकारी द्वारा वहन किया जाता है। देवियों और सज्जनों, केरला के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन समारोह में पधार चुके हैं। Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, has arrived at the venue. परेड अब केरला के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। Shri Arif Muhammad Khan was born on 18th November 1951 in Bulandshahr, Uttar Pradesh. He was educated at Jamia Millia School, Delhi, Aligarh Muslim University, Aligarh, and at Shia College, Lucknow University. Shri Arif Muhammad Khan started his political career as a student leader. He contested the first Legislative Assembly election from Siana constituency of Bulandshahr. He is an avid reader and also an author of the best-selling book of the year 2010, Text and Context, Quran and Contemporary Challenges. Shri Arif Muhammad Khan was appointed the Governor of Kerala on 1st of September 2019.
Ladies and gentlemen, we now await the arrival of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. The Honorable Rashtrapati will be received with 21 gun salutes. The practice of firing of 21 gun salutes dates back several hundred years and indicates a rich martial tradition. It is the highest honor accorded to the most honorable member of the Union of India, the President of India. All spectators are requested to rise on the arrival of the Honorable President. Please note that Rashtra salute will be accorded to the President with the national anthem played by the band. देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया इस समारोह में पधारेंगी। राष्ट्रपति महोदया के स्वागत में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी एक बहुमूल्य प्राचीन सैन्य परंपरा है। यह सर्वोच्च सम्मान भारतीय गणराज्य के सबसे माननीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। सभी आगंतुकों से सविनय निवेदन है कि वे माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर और उन्हें राष्ट्रीय सलामी दिए जाने पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the venue. देवियों और सज्जनों, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई हैं। उनके अनुरक्षण हेतु उनके परिसहायक सब लेफ्टिनेंट रॉयल कोहड़ और सब लेफ्टिनेंट अभिषेक मान हैं। The Honorable President of India is being escorted by Sub-Lieutenant Royal Kohad and Sub-Lieutenant Abhishek Man. सभी अतिथियों से आग्रह है कि कृपया अपने आसन ग्रहण करें। Ladies and gentlemen, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, accompanied by Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff, and the Parade Commander, Commander Bipin Krishna, will now review the Guard of Honor. देवियों और सज्जनों, भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और परेड कमांडर कमांडर बिपिन कृष्णा के साथ अब गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगी। In honor of the President of India, standing proudly before you today on parade are 400 personnel of INS Dronocharya,
At the helm of the 150 men honor guard is Lieutenant Commander Sahil Aluwalia as Officer of the Guard 1 and Lieutenant Commander Sumit Deorari to his left as Officer of the Guard 2. On the right side of the guard, we have 36 members of the INS Dronocharya band, and the music is being conducted by T. Vijay Raj, Master Chief Petty Officer, musician, first class. राष्ट्रपति जी के सम्मान में भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य के 400 वीर नौसैनिक आज परेड में आपके समक्ष गर्व से खड़े हैं। 150 जवानों के सम्मान गार्ड के शीर्ष पर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलूवालिया गार्ड 1 के अधिकारी के रूप में और लेफ्टिनेंट कमांडर सुमित देवराड़ी गार्ड 2 के अधिकारी के रूप में उनकी बाईं ओर हैं। In a few minutes from now, we will witness the commencement of President's Color Ceremony with the insertion of drum toli for the Pile of Drums ceremony. देवियों एवं सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में हम पाइल ऑफ ड्रम समारोह के लिए ड्रम टोली की प्रविष्टि के साथ राष्ट्रपति निशान समारोह का प्रारंभ होते देखेंगे।
pile of drums ceremony is also known as the drumhead service. It traces its origin back to a time when soldiers on the field used to arrange their drums in a pile to form an altar. Clergymen would then conduct religious services on this pile of drums to pray for victory in battle. पाइल ऑफ ड्रम समारोह को ड्रम हेड सर्विस के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक रूप से सैनिक अपनी ढोलकों की टोली को व्यवस्थित ढंग से रखकर एक वेदिका बना लिया करते थे। इस वेदिका के ऊपर पुरोहितवर अपनी धार्मिक रीति से युद्ध में जीत के लिए प्रार्थना एवं धार्मिक सेवाओं का आयोजन करते थे।